Good morning to all of you, dear students. Today in economics, we are going to start a new topic which is related with our demand. In my previous videos, I discussed with you the meaning of demand, factor affecting demand, demand schedule, law of demand, why law of demand works. All these factors I have already discussed with you. Today we are going to discuss a new topic that is known as exception of law of demand. What is the meaning of exception of law of demand? Exception of law of demand means where law of demand does not work. In my previous video, I told you the meaning of law of demand. Law of demand shows the inverse relationship between price and demand. That is, if price increases, demand decreases, and if price decreases, demand increases. But the condition is other factor should remain as it is, constant. Other factor means like income of consumer, price of related goods, taste and preferences, etc. Now today we will discuss कि कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं कि इवन प्राइस घट जाती हैं तो भी डिमांड बढ़ती नहीं है, जबकि लॉ ऑफ डिमांड तो क्या कहता है, प्राइस कम होने से डिमांड बढ़नी चाहिए. बट वी विल डिस्कस सम सिचुएशंस वेयर इवन प्राइस डिक्रीजेस बट डिमांड डज नॉट डिक्रीजेस. व्हाट आर दो सिचुएशन? नंबर वन, गिफिन गुड्स. Giffen is the name of an author who discovered this theory that there are some situations where even price decreases, demand will not increase. Even price decreases, demand will also decrease. And when it happens, normally it happens in case of inferior goods. Normally it happens in case of inferior goods, low quality goods. Low quality goods are purchased by poor section of the society because they don't have any other option to purchase, so they purchase low quality goods only. So if price of those goods decreases, तो demand for inferior goods will not increase. अगर inferior goods की price कम हो जाती है तो उनकी demand बढ़ेगी नहीं. जबकि law of demand तो क्या कहता है, अगर price कम होने से demand बढ़नी चाहिए, तो inferior goods की demand प्राइस कम होने के बावजूद भी क्यों नहीं बढ़ेगी? बिकॉज व्हेन प्राइस ऑफ इंफीरियर गुड्स डिक्रीजेस तो लिटिल बिट इनकम इज सेव्ड बाय द कस्टमर, कंज्यूमर. उनके हाथ में कुछ एक्स्ट्रा पैसा बच जाता है एंड दे शिफ्ट देमसेल्फ टुवर्ड्स नॉर्मल गुड्स. और वो हो सकता है कि वो इंफीरियर की ज्यादा क्वांटिटी न खरीद करके नॉर्मल गुड्स को भी खरीदना पसंद करें. तो दिस इज द फर्स्ट एक्सेप्शन वेयर लॉ ऑफ डिमांड does not work in case of inferior goods. Number two, necessities of life. There are certain products which are required to survive on this earth. You cannot live on this earth if you don't have those necessities. We have to purchase them whether price is more or less. If wheat is our routine food, so we have to purchase wheat whether price increase or decrease. If rice is our survival food, so we have to purchase rice whether price increase or decrease. In the same way, medicines are essential for our life when we get sick. So whether medicines are available at lower price or higher price, we have to purchase. So here law of demand works or not? I think no. Even at higher price we have to purchase medicine. Number three, status symbol products. My dear students, there are certain products which increase our status in the society. We would like to them purchase at higher price only, not at lower price. For example, like branded clothes, branded shoes, like Adidas, Reebok, etc. In the same way, Cooper Lee jeans, Raymond clothing. In the same way, in cars, heavy price cars like BMW, like Ferrari, these products are
purchased at higher price only, because these goods are purchased by richer section of the society, and that richer section purchase goods if it is available at higher price, because it is their status symbol. Sunglasses of Ray-Ban companies, their prices are more, even people purchase because it is their status symbol. Those products make the people distinct in the society. So here in case of such product also, law of demand does not work. Next is future expectation. What is the meaning of future expectation? What do you feel about future? If you feel that in future prices are going to increase, अगर आपको ऐसा लगता है फ्यूचर में प्राइसेस ज़्यादा होने वाली हैं, तो टुडे विल यू परचेज और नॉट? यस, वी विल परचेज। इवन टुडे गुड्स इज अवेलेबल एट हायर प्राइस। अगर हमें लगता है फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ने वाली हैं, तो आज हम उस गुड्स का कंजम्पशन बढ़ाएंगे, आज उस गुड्स को हम ज़्यादा खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे सर? बिकॉज फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है, तो आज अगर प्राइस ज़्यादा होगी तो भी खरीदेंगे। क्यों? फ्यूचर में प्राइस और ज़्यादा हो जाएंगी। तो टुडे आई एम परचेजिंग इवन एट हायर प्राइस। When I am purchasing at higher price, it means what does not work, sir? Law of demand does not work. Future expectation. Ignorance. What is the meaning of ignorance? Sometimes, my dear, what happens? We feel that if a product is available at higher price, its quality is good, and if a product is available at low price, its quality is poor. So by this ignorance, we purchase even at higher price. Because we have made an assumption in our mind, हमने हमारे दिमाग में एक ऐसी धारणा बना ली है कि कोई प्रोडक्ट अगर सस्ता मिल रहा है तो लो क्वालिटी का है, और अगर वो ज़्यादा कीमत पे मिल रहा है तो वो अच्छी क्वालिटी का है। जबकि ये भी हो सकता है कि वो दोनों प्रोडक्ट की क्वालिटी सेम हो, फिर भी हम हायर प्राइस पे खरीद रहे हैं, क्योंकि ये हमारी एक इग्नोरेंस है, हमारी एक गलत धारणा है। तो इन सच सिचुएशन ऑल्सो लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट वर्क। And the next is emergencies. If any kind of emergency occurred in the society, like curfew, like flood situation, in those situations we normally purchase goods where the prices are more or less, because we don't have any other option. In case of curfews, in case of flood situation, prices normally increases, price लगभग बढ़ जाती हैं, फिर भी हम खरीदते हैं क्योंकि पता है इमरजेंसी है। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा था कोविड-19 में लॉकडाउन जब हुए थे, कर्फ्यू जब लगे थे, तो लोगों ने हायर प्राइसेस पर भी चीज़ों को खरीदा था बिकॉज ऑफ इमरजेंसी। तो दीज वर फ्यू पॉइंट्स व्हिच टेल्स अस एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड वेयर लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट वर्क। नाउ लेट अस कम टू द न्यू अनदर टॉपिक चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, or the alternate name of this change in quantity demanded is movement of demand. Movement means when demand moves from its original one side to another side. How to define this change in quantity demand? When demand of a commodity changes, when demand of a commodity changes due to change in price. अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड चेंज हो जाती है, either increase or decrease, due to what? What is the reason? Due to which factor demand changes? Due to change in price. But other things being constant. Other things being constant. A minute back I discussed, my dear friends. Other things being constant. What are the meaning of other things here? Other things means like income of consumer, like taste and preference, like price of related goods, etc. अगर इन सब बाकी सब फैक्टर कांस्टेंट रहते हैं, अगर प्राइस में चेंज होने से अगर डिमांड में चेंज हो जाता है, तो दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इज नोन एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और मूवमेंट ऑफ डिमांड। दिस मूवमेंट ऑफ डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैन बी अंडरस्टूड इन टू वे। नंबर वन, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। नंबर टू, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। First of all, let us discuss extension. Extension means when something extended, कोई चीज बढ़ जाती है। How it is? How to define it? When demand of a commodity increases, I have used this arrow upside, sir. It shows increases. When demand of a commodity increases due to decrease in price.
Here I have used downward arrow. Downward arrow means price decreases. So when demand of a commodity increases due to decrease in price, again the same line we have to use, other things remaining constant, then this is known as extension. जब किसी commodity की demand बढ़ जाती है, किस वजह से, what is the reason for it? Due to price, price के घटने की वजह से, तो उस सिचुएशन को क्या कहते हैं? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कहते हैं. Let us understand with the help of a small table or a schedule. This is price column, this is Q. Q stands for here demand, quantity demand. When price is 5, demand of the product is 10. Now its price reduces. If price reduces, naturally our demand is going to increase. Now it has increased up to 50. प्राइस 5 रुपए से 4 रुपए हो गई, कम हो गई, तो डिमांड 10 से 15. यह जरूरी नहीं है कि कितना गैप लेना है अपने को. जरूरी क्या है, यहाँ प्राइस घटी है तो डिमांड बढ़ानी है आपको. आप 10 से 11 भी कर सकते हो, 10 से 12 भी दिखा सकते हो, 10 से 20 भी दिखा सकते हो, 10 से 100 भी दिखा सकते हो. Whatever figure you want to show, you can. But the concept is when price decreases, you have to show increase in demand. How to present this extension through this diagram? Sir, this is x-axis, dear friends. This is y-axis. On x-axis we have taken quantity demand. On y-axis we have taken price. At 5 rupees price, demand is 10. This is the line we are joining these lines. And when price is 4, our demand increases. Now it is 15. When we join these 2 points, my dear, we get this straight line downward sloping. This is known as DD demand curve. You see, which side we are shifting? Earlier our demand was 10. Now we are moving towards 15. हम इधर जा रहे हैं. That side means downward. हमारी डिमांड किधर जा रही है? Downward. That's why the alternate name of extension of demand is downward movement. इसको हम क्या भी नाम देते हैं? Downward movement का नाम भी देते हैं. So this is known as extension of demand. When demand of a commodity increases due to decrease in price, other things constant. Now let us come to the another topic of the same title, contraction of demand. Contraction means when demand squeezes, when demand decreases. When demand of a commodity decreases, I have used downward arrow. When demand of a commodity decreases due to increase in price. प्राइस के बढ़ने से अगर डिमांड क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है. अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट. यू हैव टू यूज दिस सेंटेंस इन दिस सिचुएशन. इफ यू आर नॉट यूजिंग, इफ यू आर नॉट राइटिंग अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, योर डेफिनेशन इज इनकम्प्लीट. टीचर्स विल नॉट प्रोवाइड यू मार्क्स. तो जब डिमांड कम हो रही है, किसकी वजह से? प्राइस की वजह से. बाकी फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? कॉन्ट्रैक्शन. Let us understand with the help of a table. Price, when price is 5, demand is 10. When price becomes 7, price बढ़ गई है, तो you have to show decrease in demand. आपको डिमांड कम करनी है. अब मैंने 10 से 5 दिखाया है. You can show it from 10 to 9, 10 to 8, 10 to 7 or 2, 3, whatever you want to show, you can. But ध्यान में क्या रखना है? प्राइस को अगर बढ़ाया तो डिमांड को क्या करना है? कम करना है. This is the diagram. On x-axis quantity demanded, on y-axis price. At 5 rupees demand is 10, 5 demand is 10. Now price becomes 7. पहले 5 थी, अब 7 रुपए हो गई है, तो डिमांड कितनी हो गई? 5. तो आपके पास ये 2 पॉइंट है दिया. When you will be joining these 2 points, you are getting this DD demand curve. Now here earlier demand was 10, now demand is 5. So we are moving this side. We are moving this side. हम इधर मूव कर रहे हैं. It means we are going upside. तो alternate name of contraction of demand is upward movement because we are moving upside. Our demand is decreasing. So this was another topic: change in quantity demanded, extension and contraction. Thank you.